Hello everyone. Today is 6th September 2025. So let's discuss the Hindu news analysis. So first news is related to India's military roadmap TPCR 2025. Technology, Perspective and Capability Roadmap 2025. Do remember or quote it in your answer that future wars will be fought less with bullets, more with bandwidth. Okay, you can quote it in your answer. And the background of this news is India released TPCR every few years to guide military modernization. Okay, every few years to guide military modernization. Okay, पिछला रोड मैप 2018 में आया था, ठीक है. बट अब ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, ईवी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं, ठीक है. यूक्रेन वॉर ने दिखाया कि टैंक्स और जेट्स वल्नरेबल हैं इफ ड्रोन प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ड्रोन्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो गवर्नमेंट रिलीज टीपीसीआर फोकस क्या है? स्टेल्थ आरपीएस दैट इज remotely piloted एयरक्राफ्ट्स. ओके, इनकी रेंज कितनी होती है? 15,000 किलोमीटर. एंड एल्टीट्यूड कितना होता है? 60,000 फीट. लॉटरिंग मिनिशंस एआई से टारगेट डिटेक्ट करते हैं और खुद क्रैश हो जाते हैं ये, ठीक है. सो ये एआई से टारगेट को डिटेक्ट करते हैं और खुद ब खुद जाके टारगेट के अंदर क्रैश कर जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है? ब्लास्ट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं होता. एंड देयर इज टर्म इन न्यूज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिनाइल बबल. 15 किलोमीटर का जोन जहाँ पर एनिमी ड्रोन्स जाम हो जाए. एनिमी ड्रोन्स जाम हो जाते हैं, ठीक है. न्यूक्लियर सर्वाइबिलिटी न्यूक्लियर सर्वाइबिलिटी सिस्टम, इसका मतलब होता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर करना, ठीक है. कुछ प्रीलिम्स के टाइप्स याद रखना. CBRN दैट इज केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इज नॉट इक्वल टू ओनली न्यूक्लियर, ठीक है. कई बार क्या होता है कि हम CBRN को सिर्फ न्यूक्लियर समझ लेते हैं, ठीक है. इट इज़ नॉट ओनली इक्वल टू न्यूक्लियर, ठीक है. तो इसमें सारे इंक्लूड होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ठीक है. RPS जो होते हैं हमारे, दैट इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स आर नॉट ओनली यूज्ड फॉर ओनली सर्विलेंस, they are also used for strike and CBRN detection. कुछ
मेंस पॉइंट्स याद रखना हमारे को। मेंस में इनरिचमेंट पॉइंट्स हैं। के सुब्रमण्यम सेड कि इंडिया सिक्योरिटी लाइज इन credible credible deterrence not parity. We can also compare with US third offset strategy. Third offset strategy. Okay, where use of AI plus robotics. Defense budget 2025 was 30% on research and development, highest in 10 years. Okay, key terms which you need to remember is credible minimum deterrence, that is India's nuclear doctrine emphasizing sufficient capabilities to deter adversaries without seeking nuclear parity. This approach maintains strategic balance while avoiding an arm रेस। ओके, इंडिया बोलता है हम न्यूक्लियर पैरिटी नहीं चाहते, बस इतना कि एनिमी डरे। ठीक है, एंड वी हैव अग्नि मिसाइल एंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वी हैव, ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। न्यूक्लियर ट्राइड comprehensive ability to launch nuclear weapons from land, that is Agni missile, sea, that is INS Arihant, and air, that is fighter aircraft, ensure survivable second strike capabilities. ठीक है, and next term is loitering munition, kamikaze drone that circle target areas, identify specific targets using AI and self-destruct into them with precision strike capabilities. ठीक है, हवा में घूमता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनिमी को डिटेक्ट करता है, खुद क्रैश होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूक्रेन का शहीद ड्रोन, यूक्रेन का शहीद ड्रोन। ओके, electronic warfare, strategic use of electromagnetic spectrum to jam, intercept, and mislead enemy communication and navigation system, creating tactical advantage. Basically radars और कम्युनिकेशन को जैम करना। ठीक है, रडार्स और कम्युनिकेशन को जैम करना। फॉर एग्जांपल, इजराइल ने सीरिया के रडार्स जैम किए थे 2007 में। ओके, एंड कुछ और टर्म्स जो हमें याद रखनी है, दैट इज denial bubble, that is electronic warfare shield, जहाँ पे एनिमी ड्रोन या कम्युनिकेशन फेल हो जाए, या फिर कम्युनिकेशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन के कुछ जोन में बबल बनाता है। ठीक है, रशिया क्या करता है, यूक्रेन के कुछ जोन में क्या करता है, बबल बनाता है। ओके, CBRN रिकॉन व्हीकल, CBRN रिकॉन व्हीकल्स, बेसिकली जीप जो बैटलफील्ड में रेडिएशन केमिकल डिटेक्ट करे। एग्जांपल, फुकुशिमा न्यूक्लियर का डिजास्टर हुआ था, उसके बाद CBRN रिकॉन व्हीकल्स का यूज हुआ था। ठीक है, जीप टू डिटेक्ट रेडिएशन एंड केमिकल्स। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द TPCR 2025. Okay.
Hope you have got a lot of insight about this news. Next is Operation Sindoor, whole of nation approach, and you can quote in your answer that national security is no longer the army's job alone. It's everyone's responsibility. National security is no longer the army job, no longer the army job alone. It is everyone's responsibility. ठीक है. इंडिया ने पिछले कुछ ईयर्स में मल्टीपल जॉइंट ऑपरेशन किए हैं जिसमें आर्मी प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस सिविल सोसाइटी प्लस इंडस्ट्री साथ आए. ठीक है. ऑपरेशन सिंदूर ने हमें सिविल मिलिट्री सिनर्जी का रियल एग्जाम्पल दिया. ठीक है. करंट न्यूज़ क्या है कि जो हमारे आर्मी चीफ उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर शोड होल ऑफ द नेशन रिजोल्व फ्रॉम सोल्जर टू कमांडर्स, फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू इंडस्ट्री. ओके. सो बेसिकली होल ऑफ द नेशन जो अप्रोच है दैट इज नॉट इक्वल टू ओनली आर्मी. ओके. नॉट इक्वल टू ओनली आर्मी. इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री plus civilians. Okay. Something means enrichment material which you can quote in your answer that General Bipin Rawat said future wars will be multi-domain from cyber to space. Okay. You can also compare with, in the mains you can compare with US Goldwater Nicholas Act 1986, that is integrated civil military approach. Okay. Even second ARC said कि गवर्नेंस और सिक्योरिटी एक ही चैन होने चाहिए. गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी क्या होने चाहिए? एक ही चैन होनी चाहिए. ठीक है. Some key terms you need to remember, that is strategic clarity and civil military synergy and deterrence signaling. That is, strategic clarity is the long-term policy without confusion. Okay. Long-term policy without any confusion. For example, India no first use doctrine. Okay. And civil military synergy is bureaucracy plus politics plus army working together. Okay. Example, 1971 Bangladesh Liberation War. Okay. And deterrence signaling is warning without war. For example, Agni 5 missile test after China tension.
this was all about the Operation Sindoor whole of the nation approach. This is what is written on the slide, that Army Chief highlight Operation Sindoor as demonstrating India's whole of nation resolve, showcasing unprecedented synergy from individual soldiers to top commanders, strategic clarity, that is long-term consistency in policy approach rather than ad hoc reaction to security challenges, civil military synergy, seamless collaboration between military forces, bureaucracy and political leadership, data signaling using coordinated actions and statement to warn adversaries without escalating to warfare. Okay. And the mains application, crisis response mechanism, civil military coordination framework and strategic policy consistency. And next news is BRICS IR's international relation, BRICS Virtual Summit on US tariffs. Okay, so you can quote in your answer that when the West imposed tariffs, the global South looks to BRICS for relief. When the West imposes tariffs, global South looks to BRICS for relief. ओके, सो यूएस ने बेसिकली क्या किया था, 50% टैरिफ इम्पोज किए, तो जिससे क्या हुआ, ग्लोबल ट्रेड शॉक ब्रिक्स कंट्रीज को लगता है कि डब्ल्यूटीओ उनके फेवर में काम नहीं कर रहा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ इज नॉट वर्किंग इन देयर फेवर. ओके, सो ब्राज़ील ने ब्राज़ील ने क्या किया है, ब्रिक्स लीडर्स को बुलाया, ठीक है. इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस जयशंकर. इंडिया को एस जयशंकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फोकस क्या है, यूएस टैरिफ एंड ग्लोबल साउथ के लिए क्या हो, कोलैबोरेटिव स्टैंड. एंड कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है प्रीलिम्स स्टेप्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज प्रीलिम्स स्टेप्स is that BRICS plus. Now it is not only BRICS, it is BRICS plus. That is Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arab and UAE. ओके, एंड ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई. ओके, एंड some mains enrichment material which you can quote in the answer, that Modi at BRICS 2022 said global South must not be silent sufferer. Okay, and right now it is global, you can quote this keyword, global trade governance, where G7 versus BRICS, okay, is equal to 2 poles. So current news is Brazil convened BRICS leaders to address escalating US tariff policies, with India represented by External Affairs Minister S. Jaishankar highlighting multilateralism response to protectionism measures. Brazil summit convener, okay, South Africa advocating global South interest, Russia supporting alternative trade mechanism, India represented by External Affairs Minister, China major target of US tariff policies. Okay, Prelims BRICS plus now include Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arab and UAE. BRICS headquarters is in the Shanghai, that is New Development Bank. Okay, multilateralism, that is cooperative approach where multi-state work together
through international institutions like the UN and WTO to address global challenges and establish fair trade rules. So basically multiple nations क्या करते हैं, cooperation करते हैं. Example, UN climate deal. Okay, protectionism, economic policy using tariff, quota, subsidies to shield domestic industries from the foreign competition, often leading to trade wars and retaliatory measures. Okay, for example, Trump steel tariff, steel tariffs. Okay, and global southwest developing nation of Asia, Africa, and Latin America collectively pushing for fair global trade rules and representation in international economic governance. Developing nations जो equity demand करते हैं, for example G77. Okay, secondary sections, that is indirect punishment. For example, इसमें आ जाएगा हमारा US threat for India Iran oil. Okay, US and EU penalties imposed on third countries for trading with sanctioned state, extending economic pressure beyond the primary targets. Okay, next news is Trump's lost India to China remark. You can quote in the answer that geopolitics is also about perception battles. Is also about perception battles. ओके, इंडिया ने एससीओ की मीटिंग अटेंड की अभी. ओके, बिकॉज इंडिया इज द मेंबर ऑफ एससीओ. ओके, ट्रंप का मानना है कि इंडिया के चाइना के साथ एससीओ में क्लोज होने से यूएस को क्या हुआ है, लॉस हुआ है. ओके, सो दैट्स व्हाई ट्रंप गेव दिस रिमार्क दैट यूएस लॉस्ट इंडिया टू चाइना. ओके, आफ्टर द यूएस after Modi attended the SCO Tianjin summit. Okay, some prelims pointers which you need to remember is that SCO headquarters is in Beijing, not in the Moscow. Okay, SCO founded in 2001 at Shanghai. Okay, some amazing research material. Jayashankar said India does not join alliances. India make choices. India does not join alliances. India make choices. India make choices. Nehru said no alignment is freedom of judgment. Okay, so this was all about this news that US President Trump remark US lost India to China following PM Modi's presence at SCO Tianjin summit reflect growing concern about India's strategic positioning. And next is strategic autonomy. India's policy of making independent foreign policy choices without aligning with any particular bloc. That is, India अपने decision खुद लेगा. Example, Russian oil plus Quad की membership. ठीक है. Narrative warfare, that is media and propaganda, using media and public opinion to influence global perception and weaken rival nation position. Hedging strategy, maintaining relationship with rival blocs to avoid over dependence on any single partner. Okay, rival blocs के साथ parallel ties, example India का in SCO and Quad. Okay, next news is US tariff, Tamil Nadu textile shock, trade war kills jobs faster than bombs. Okay, you can quote it in your answer that trade war kills jobs faster than bombs. What happened is Tamil Nadu ke Tirupur and Karur are basically global textile hubs.
Kanpur and Karur, they are the global textile hub. अब यूएस ने जो 50% टैरिफ लगाया है उस वजह से क्या हो रहा है, ऑर्डर कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं वियतनाम एंड बांग्लादेश की तरफ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स वर्थ 4 बिलियन फ्रॉम तमिलनाडु क्या हुआ है, बैडली हिट हुए हैं, ओके। सम प्रीलिम्स traps which you need to remember is that India textile exports to US is worth $11 billion, okay, and 4 billion from Tamil Nadu. Means enrichment you can quote MSMEs contribute to 30% GDP, okay, 50% exports, 3% exports, and 110 million jobs. And WTO said global south lost 800 billion annually to tariff escalation, okay. And some key economic concept which you need to remember is tariff escalation, policy of imposing higher tariff on processed goods compared to raw material, deliberately hurting value-added exports and forcing countries to remain commodity exporters. Raw duty low, finished duty high, okay. For example, cotton versus shirt, okay. Non-tariff barrier, hidden trade restrictions, using quality standard quotas and complex regulation as protection mechanism beyond traditional tariff. Basically कहना कि आपकी क्वालिटी खराब है। फॉर एग्जांपल EU का मैंगो बैन, ओके। वैल्यू चेन relocation, strategic shifting of manufacturing order to cheaper alternative supplier when original source become uncompetitive due to trade barriers। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर्स होते हैं, चीप हब्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वियतनाम में अब टेक्सटाइल राइज हो रहा है, ओके। MSME, that is micro small medium enterprises, MSME vulnerability, micro small and medium enterprises forming the backbone of employment and exports in India, particularly susceptible to sudden trade policy changes. Ukraine war, global south impact. At the United Nations General Assembly, India raised concern about the collateral consequences of the Ukraine war, particularly fuel and the food inflation severely affecting global south nation, okay. Food crisis disrupted grain export from Ukraine and Russia, causing global food price inflation. Developing economies facing currency devaluation and debt servicing challenges, okay. So you can quote in your answer that wars don't just kill soldiers, they starve civilians. Wars don't just kill soldiers, they starve civilians, okay. You can quote in the answer। क्या हुआ है कि यूक्रेन वॉर की वजह से वीट, ऑयल और फर्टिलाइजर्स इनकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, डिसरप्टेड हो गया, और उससे डेवलपिंग नेशंस में क्या हो गया, इन्फ्लेशन और डेट क्राइसिस, इन्फ्लेशन एंड
डेट क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के अंदर इस इशू को रेज किया है, फ्यूल एंड फूड फाइनेंस क्राइसिस, दैट इज FFF, 3F, दैट इज फ्यूल, फूड एंड फाइनेंस। ओके, इस क्राइसिस को रेज किया है दैट इट इज हर्टिंग द ग्लोबल साउथ। ओके, सम प्रीलिम्स स्टेप्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर दैट UNGA के जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस दे आर नॉन बाइंडिंग। ओके, collateral damage, so it was indirect. Collateral is equal to indirect consequences. Okay, and you also need to remember that OPEC shock was in 1970. ओके, इसमें भी क्या हुआ था, सिमिलर सप्लाई डिसरप्शंस थे, key terms which you need to remember: fuel, food, finance crisis, that is triple hit. Example, Sri Lanka. Okay, supply shock transmission, that is wheat blockade. उस वजह से क्या हो रहा है, यूक्रेन से वीक ब्लॉकेड हो रहा है, तो ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, ग्लोबल साउथ एडवोकेसी, so it is India's role at G20 Delhi Declaration. It is basically India role at G20 Delhi Declaration 2023. Okay, and next is governance and disaster risk, Himachal floods and land resettlement. Disaster wash away homes, but resettlement test governance. Okay, you can quote in the answer. बेसिकली हिमाचल के बारे में कुछ फैक्ट, 68% हिमाचल में क्या है, फॉरेस्ट, फ्लड डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स। CM ने डिमांड किया है, CM डिमांडेड 1 बीघा फॉरेस्ट लैंड per family, but it needs FCA, that is Forest Conservation Act clearance, 1980 clearance. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि स्टेट और सेंटर में टसल हो रही है ऑन क्लियरेंसेस, बिकॉज क्या होता है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन is mandatory. Some means enrichment material, you can quote in the answer that IPCC AR6 said ki Himalayas are warming very fast. Himalayas are warming at the fastest pace. UNHCR इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मिलियन climate refugees annually. Okay, so key terms which you need to remember is managed
managed retreat, ESZ, and compensatory afforestation. Compensatory forestation. Okay. So manage retreat is planned shifting from high risk zone. Okay. मैनेज रिट्रीट मतलब कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को प्लान वे में शिफ्ट कर रहे हो, प्लान्ड शिफ्टिंग. ओके. फॉर एग्जांपल उड़ीसा के कोस्टल रीसेटलमेंट, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से रीसेटलमेंट हुई थी. इको सेंसिटिव जोन इज बेसिकली बफर जोन विद restrictions. Western Ghat, ESZ. Okay. Compensatory afforestation is forest diverted is equal to new forest created. Okay. Forest diverted is equal new forest. Okay. For example, Delhi Metro tree plantation. Example, Delhi Metro tree plantation. So this was all about this news that Himachal Pradesh Chief Minister requested allocation of 1 biga of forest land per displaced family following devastating floods, highlighting the complex challenge of resettlement in state where 68% of land is forest, 68% forest cover. Himachal Pradesh forested area percentage. Okay, 1 biga per family. Requested land allocation for displaced families, and forest diversion process is basically under Forest Conservation Act 1980 requiring union government approval, due to which there is tussle. Compensatory afforestation, that is mandatory replanting of forest for any diverted forest land, and eco-sensitive planning, that is balancing development needs with the environmental protection. So this was all about today news. Thank you for watching this analysis. See you in the next video.